Fine, let's start. So last class में we were talking about progressions. हम progressions की बात कर रहे थे. We understood three types of progressions. Actually two types के हमने पढ़े थे, arithmetic progression and geometric progression. And out of this progression एक mean निकलता है. So mean जो तीन type के होते हैं, arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. वो तीन type के mean हमने पढ़े थे. उन तीनों के बीच में जो relationship होता है वो हमने समझने की कोशिश की. This is what we have done in the last class. ठीक है, लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था. प्रोग्रेशंस के थोड़े क्वेश्चंस हमने चालू किए थे. वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस. तो थोड़े एक दो क्वेश्चन जो टाइप है वो बचे हुए हैं, दैट विल डिस्कस टुडे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोबेबिलिटी. लेट्स स्टार्ट. The first question for the day is minus 150 a term of the series 11, 8, 5, 2 and so on. Let's try to solve this, then we'll talk about the percentage. Let me give you one hint. We'll start with the hypothesis, which will start with one assumption. एक assumption से हम चालू करेंगे that this minus 150 is actually a term of this series. तो हम ऐसे मान के चलते हैं that the nth term of given series be minus 150. ये हम assumption लेके चल रहे हैं, ठीक है. Now over this series, अगर आप ध्यान से देखो तो 11 से 8, 8 से 5, 5 से 2, so there is a constant difference, and the difference is minus 3. ठीक है, तो 11 नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज आपको देखने को मिल रहा है कि द कॉमन डिफरेंस इज -3. द फर्स्ट टर्म इज 8 इज इक्वल्स टू 11. कॉमन डिफरेंस -3 है क्योंकि 3 कम होते जा रहे हैं, राइट. an हमने निकाल अज्यूम कर लिया है दैट 10th टर्म इज -150. ये हमने assumption कर लिया है, राइट. सो फ्रॉम हियर इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ nth टर्म, दैट इज, और इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट करता हूं a plus n minus 1 into d. तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाता हूँ यहाँ पर, आई गेट -150 is equals to 11 plus n minus 1 into -3. So can you solve this and tell me the value of n? What is going to be the value of n? $54.66. Okay, got one answer, 54.6. ठीक है, so ये अगर आपका आंसर आ रहा है, this is not an integer, right? So या तो अगर 54th टर्म होता 150 या 55th टर्म होता, right? तो हम मान के चलते that 150 would have been a part of this series, वो इस सीरीज का एक पार्ट होता, हम ऐसा मान के चलते. But it is not the case. The case is quite different. कि जो 54.66 टर्म है, अब पॉइंट में तो कोई हम चीज लेते नहीं, either it is first term or second term. 1.5 टर्म तो कुछ होता नहीं है. So one assumption is wrong that this nth term is not actually ये जो n है, this is not integer. It's not turning out to be an integer. So we can conclude that -150 is not a part of given series. एक तो क्वेश्चन पूछा कुछ और है, सॉल्व करने का तरीका obviously it is quite different. Fine. So let's look into the next one. The sum of first 4 and 12 terms of an AP is 26 and 222 respectively. What is the sum of first 15 terms of a group? Okay, try to solve this. What is the answer?
Okay, let's see how this question can be solved. The sum of first four, मतलब मुझे first four terms का sum दिया हुआ है, that is S4. It has been given as 26. This can be further written as अब as sum का formula क्या होता है, if you guys remember it from the last class. 367.5. Sorry, voice is too low. Let's see the answer. So sum का हमारे पास formula क्या होता है, Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 times d. राइट, ये होता है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब n की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, 4. सो 4 by 2 2a plus 4 minus 1 into d. This becomes in simple terms, so 2 आ जाएगा 4 by 2, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, so 4a plus 3d, this is equals to 26, sorry 36. Similarly, the sum of first 12 terms is given as 12. It is given as 2, 2, 2. So again, 12 मतलब 12 by 2, 2a plus 12 minus 1 to d. This becomes 6 into 2, यानी कि 12a plus 11d is equals to 2, 2, 2. फर्स्ट इक्वेशन है, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ. लेट्स कीप द a टर्म इक्वल, दोनों केस में इक्वल कर लेते हैं. So I'll multiply this entire equation by 3, which becomes 12a plus 9d is equals to 78. तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. So we'll just be subtracting it. ये वाला जो टर्म है, this will get cancelled out and I'll get minus 2d is equals to I guess I have made a mistake over here. So जो 6 है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 भी जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा. So this terms will be changed a little bit. ये वाला टर्म्स जो है, when this 2 gets multiplied with 3 you will get 6, and when this 6 gets multiplied with 11 you will get 66. Again जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, so 6 into 3 is 80. Now अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको, so I'll get different value which is 48. Minus 48d is equals to subtract these two terms. You are going to get minus 144. minus 1, 4 to 144. 144. Or from here you can just divide it to get the value of d. 144 minus 144 minus 48, which will be basically 3, right? 48 into 3 is 144. So d की value आपकी 3 आ गई. Now any of the equation if you substitute it, अगर आप substitute करते हैं you will get the value of a as well. यहाँ से you can find out the value of a, और let's say यहाँ पर substitute करते हैं 4a plus 6 times 3 is equals to 26. ठीक है, और 4a will be equal to 26 minus 80 which gives 8. So a की वैल्यू हो जाएगी 8 by 4, यानी कि so you got the value of a, you got the value of d. अब आपको निकालना है sum of 15 terms. Sum of 15 terms, again 15 by 2, 2 into a यानी कि 2 plus n जो है मेरा 15 minus 1, 15 minus 1 into d 3. ये हो जाएगा. So
So if you solve this one, you'll get the answer. Can you tell me what is the answer you are getting? Three, four, five. It's correct. 3 345 is the answer जो हमें यहाँ पर चाहिए. A pretty simple question. ज़्यादा कुछ करना नहीं था. Just you need to solve two equations. Let's see the next one. Okay. An EP consists of 50 terms, of which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. So क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर? It is pretty similar to what we had in the last question. खाली फर्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में हमें सम दिया हुआ था, यहाँ पर सम नहीं दिया हुआ. So if you talk about the nth term of an EP, so a plus n minus 1 into b. यहाँ पर पहले थर्ड टर्म की बात करते हैं. a3 हमें दिया हुआ है. a3 will be a3 is 12, which turns out to be a plus 2d is equals to 12. ये equation 1. And the last term और मुझे दिया हुआ 50 टर्म दिए हुए हैं. So by basically 50th term is going to be 106 और a plus 49d is 106. अब दो इक्वेशन मिल गए. You can solve this. You can solve equation number 1 and 2. Find out the value of a and d. Tell me the answer. What is the value of a and d you are getting? 64. Final answer is the correct. What is the value of Yes, a? and A is 8 and D is 2. A is 8, b is 2. ठीक है, ये दोनों मिल गया. Now we are supposed to find out the 29th term. 29th term will be a plus 28d. First term मेरे पास आ जाएगा 8 and 28 into 2. So it will become 8 plus 20 into 2 is 56. So 56 plus 8, 64. The final answer will be equal to 64. Pretty simple question. You can easily do it. खाली जो equation solve करनी है, that is the only thing where you need to reach. Let's see the next one. Okay. Find the sum of infinite series. Now this is an infinite series. ये हमें ऐसा question में दिया हुआ है. We are supposed to find out the sum. So before we start solving this question, I'd like to mention some of the things. पहली चीज मैंने बताया हुआ था last class में भी, that sum of infinite term, sum of infinite series, not infinite term, infinite series is only possible when r is less than 1. The common ratio is less than 1. ठीक है, पहली चीज ये आ जाती है. अच्छा, this we used to find it GP. ठीक है, तो भले क्वेश्चन में नहीं दिया हो, अगर मुझे इनफाइनाइट सीरीज दिया जा रहा है, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. अच्छा, एक और चीज हम डिस्कस कर ही लेते हैं. लाइक द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, it is given as is. Does anyone remembers the formula? A due to A upon 1 minus r. This is for the infinite series. Infinite series के लिए a upon 1 minus r. Now you know the a हमें काफी easily दिया हुआ है 2. For r you need to calculate the r. अब r क्या होगा? Second term a2 divided by first term. Second term है मेरे पास 4 by 3, first term है 2. So become 4 by 2 यानी कि 2 by 3. In case if you are feeling doubt कि ये कैसे आ गया, क्या आ गया, ये सही है या नहीं है, you can again cross check it by a3 by a2, which becomes 8 by 9 divided by 4 by 3. Right, so this 4 will get cancelled with 8 will get cancelled by 4, so we get 2, and 9 will get cancelled by 3, so we get 2 by 3. So a की वैल्यू भी आ गई है, r की वैल्यू भी आ गई है. Just for cross check you can see that the value of r is less than 1. 2 by 3 है यानी कि 0.67 के अराउंड होती है, which is less than 1.
Right. So you can find out the sum of this infinite series. That is 2 upon 1 minus 2 by 3. What will be the answer? 6. Final answer will be a 6. अच्छा, before we move on to the next part of this, actually यहाँ पर तो एक खत्म हो जा रहा है बस if we move on to the next part उससे पहले एक चीज डिस्कस करने का. Have you seen any of the case जहाँ पर we use infinite series or sum of infinite series? Yes, sir. Where can you tell me the example? So by solving quadratic equation, sir. Solving quadratic equation. I'll tell you a practical example जहाँ पर we actually use this kind of equation to find out the sum. Okay. So there are certain terms that you might have remembered from your school. तो school से आपको याद होना चाहिए engineering mechanics physics के अंदर आता था ये चीज. So let's say there was a ball. This ball has been thrown at a height from a height of let's say h to the ground. So यहाँ से इस ball को हमने नीचे की तरफ फेंका. So it takes let's say some certain time it takes. अब जब ये जमीन पे आती है, there is some coefficient of restitution. We call it E से हम इसको नोट करते हैं coefficient of restitution. वो ये बताता है कि velocity of impact to the velocity of incoming velocity and departing velocity. उसका ratio बताता है. So let's say the ball is coming over here due to some inertia, due to some part of this ground. Ball it will be bouncing back लेकिन ये पूरी हाइट तक नहीं जाएगी, it will go to certain height. ठीक है, ये वहां तक जाएगी. अब इस पॉइंट पे पहुंची, अब यहाँ से वापस it will travel down, will again travel down, and again जब ये जमीन पे पहुंचेगी तो some energy, some of the kinetic energy will be absorbed and again it will bounce back to some of the part. तो क्या हो रहा है, you can see the distance traveled by this ball it is decreasing continuously. Right. अब यहाँ से हमें क्या दिया होता है, the distance has been given and this follows a particular series. This series depends on this coefficient of restitution. So distance दिया होता है, velocity दी हुई होती है. ठीक है, अब हमें निकालना होता है time, the time taken by the ball to come at rest. ठीक है, अब इस केस में क्या है, we will see कि पहले जो height थी वो 6 थी, फिर 3 हो गई, फिर 1.5 हो गई, तो ये half होती जा रही है, कम होती जा रही है. Just for the example, so हर बार half होती जा रही है, कम होती जा रही है. बट ऐसा नहीं है कि कभी भी ये जीरो हो रही है. But again, since the ratio is less than 1, the at certain point of time, if you find out the sum, it is going to be infinite. So हम क्या करते हैं, पहले हम distance निकालते हैं, then we'll find out the time taken to cover those distance, and that is equal to the time taken by the ball to come at rest. ठीक है, ये इसका एक practical question है. I'll try to collect the question in the next class ताकि हम उसको solve कर सकें. We'll give you a better idea कि कैसा ये हम infinite series जो होती है इसको actual में हम implement करते हैं. So anyways, let's move on to the next topic for the day जो मैं चालू करना है. So today we are going to start with probability. So probability के अंदर I have covered many of the topics. Though I haven't covered one of the important thing, that is probability distribution. ठीक है, वो मैंने यहाँ पर cover नहीं किया हुआ है because rarely मतलब आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि these gate people they have asked question from probability distribution. So वहाँ से questions आते नहीं है. So probability distribution इसके अंदर cover नहीं किया गया. Secondly, conditional probability that is also not being covered. That I guess will be covered in engineering mathematics. उसके अंदर ये चीज cover की जाएगी. Rest the basic fundas and what are the definitions and what are the things वो सब हम यहाँ पर cover करेंगे. So let's start with the basic definition of probability. So probability it stands for, like हिंदी में हम इसको बोलते हैं आशंका. ठीक है, so it is degree of uncertainty. कौन सी चीज कितना हो सकती है और कितना नहीं हो सकती, that is defined by probability. If I talk about an event, let's say there is an event E, so the probability of E or of happening E is number of outcomes, or I'll just call it number of favorable outcomes. Right.
फेवरेबल आउटकम्स, वो आउटकम्स इसमें एक्चुअल में ई हो रहा है टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। राइट, दिस इज हाउ वी गिव द प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इसके रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स है, लेट्स टॉक अबाउट देम। लेट्स से देयर इज एन इवेंट, there is an event which is being repeated. Right, so event is being repeated under same conditions, but but it does not give same output each time. तो ये जो केस होता है, दैट इज अ केस वेयर वी ट्राई टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्चुअल में यही केस होता है जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इस चीज को हम कॉमनली वी कॉल इट एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आई एम थ्रोइंग अ डाइस, so even though the temperature, the pressure, atmospheric pressure, everything is constant, ठीक है, still whenever I toss the dice I'm not going to get the same output every time, ठीक है। So this kind of experiment is known as random experiment। अच्छा, इसका अपोजिट भी एक होता है, that an event is being repeated under same conditions and gives same output each time। So when the output is also same if the event is being repeated, उस event को हम बोलते हैं deterministic experiment। Deterministic experiment। Right, let's talk about an example, right? So जैसे हमने देखा random experiment का एक example हम consider कर सकते हैं, yes, that is throwing throwing a dice। Every time you throw a dice get a different result। Deterministic का मैं बात करता हूँ, let's say let's throw a stone out of window। If we throw a stone out of window, so it's quite obvious that the stone is going to go down due to gravity। ऐसा नहीं है कि उड़ के ऊपर चला जाएगा, that is not a possibility। So we know every time we throw a stone it is going to get down only। So that is a deterministic experiment। जो चीज है वो वैसी ही होने वाली, is going to give you the same output every time। अच्छा, जब भी हम probability की बात करते हैं, there are certain things which we actually look for। The first one is sample space। So what is sample space? Sample space is the set containing all the possible outcomes। Is containing all the possible outcomes of a random experiment। ठीक है, तो कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं ईच टाइम। इफ आई ट्राई टू get entire list or entire set of the outputs, that is known as your sample space। For example, in case of dice, the sample space will be 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा एनी टाइम यू थ्रो द डाइस। If you talk about coin, right, in that case you will get either head or tail। Right, there are random chances except for Bollywood movies कि भाई सिक्का जो है आपका vertical खड़ा हो जाए, बाकी either you are going to get head or you are going to get tails। Right, then next thing that we talk about is mutually exclusive events।
mutually exclusive events. Now what is mutually exclusive events? वो events जिनका ऐसा होता है कि if one event is happening, then it is sure that other type of event will not happen, right? So basically, it means that occurrence of one event, right, means, or it decides that the non-occurrence of other event. What does it mean is basically let's say if I'm throwing a dice again, or if I'm throwing a coin. So if I get head, it is sure that I'm not going to get a tail, right? So either I'll get a head or I'll get a tail. So एक इवेंट हो रहा है, so दूसरा इवेंट उस टाइम at particular point of time नहीं हो सकता, ठीक है? So there are two events, either it can be head or it can be tail. अच्छा, इसका अपोजिट होता है mutually inclusive events, right, where the two events they can occur simultaneously. Let's take an example, right? If I throw a dice, तो event वन में बोल रहा हूँ that there is an odd number, and event टू में बोल रहा हूँ that is a prime number, there is a prime number, right? So ये जो हो जाएंगे inclusive event हो जाते हैं. Suppose 3 आया, so I'm also getting a odd number and I'm also getting a prime number, और 5 आया, so दोनों चीजें साथ में हो रही है, that becomes mutually inclusive events, जहाँ पर दो चीजें एक साथ हो रही हैं, they are having the same outcomes, right? That is mutually inclusive. वैसे mutually exclusive, this is our main actually, ये चीजें ये समझना जरूरी है that one event happens, दूसरा नहीं होने वाला, right? Now next thing is equally likely events. Equally likely events क्या होती है? So the events, two events having equal probability of occurrence. Two events having equal probability of occurrence, उसको हम बोलते हैं equally likely events. Again, if you want to take the example, the best example would be a coin. Heads or tails in coin. दोनों की probability same होती है 1/2. Similarly, any number on the dice, हर किसी की जो probability होती है that is same. Next is, what do you mean by independent events? Right, the events which are not dependent to each other, right? Simply अगर simple words में बोला जाए, so the events which are not dependent on each other, they are the independent events. Or if you talk about, if you want to define these events, it will be the occurrence of one event, has no effect on the occurrence of other event. This is what independent event is. If you want to take example for this one, talk about flipping 2 coins. These are independent events. आप एक को थ्रो कर रहे हो, you can have head, उससे दूसरे को फर्क नहीं पड़ने वाला कि पहले का हेड आया दूसरा भी हेड ही आया. It can be tail. So these are independent events. Right. So these are certain things that we should know. Now let's start solving the questions and then we'll discuss. Just give me 1 minute. I'll be sharing my screen once again. So this has been given. A book contains 50 pages. A page is chosen at random. What is the chance? This probability is also sometimes given as chance.
Right. So if the chance has to be calculated or probability has to be calculated, it is the same. So what is the chance that the sum of digits on the page is equal to 6? Yeah, हमें निकालना. So the definition of probability says that number of favorable outcomes to the total number of outcomes. ठीक है. तो event क्या है हमारे पास? Event is sum of digit is 6. ये event कब कब होगा? Let's say if I go to 6th page number, तब ये चीज होगी, है ना? 6th page number पे आया तो sum of digit is 6. Then if I go to 15 page number, देखो मैं चालू कैसे कर रहा हूँ, स्टार्टेड फ्रॉम 0. सो अगर एक 0 है, दूसरा 6 है, देन 1 5, देन 2, दूसरा हो जाएगा 4, देन 3, 3, देन 4. I can also go for 5 1, but वो 50 से ऊपर हो जाएगा. The big book has only 50 pages. So 1 2 3 4 5. There are 5 cases in which the sum of digits will be 6. ठीक है, ये हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम. ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम is 6. Not 6, is 5. And total number of outcomes. Total number of outcomes कहाँ से आएंगे? Because there are 50 pages. There will be 50 different numbers that I can get. Probability यहाँ पर मेरी बन जाती है. The probability of event E is number of favorable outcomes 5 to total number of outcomes, which becomes 1 by 10 or 0.1. Simple है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर. It's quite simple. So one thing that you should note over here, that in any case the probability of any event to occur, it will be either less than or equal to 1. Right? It can never be greater than 1. Never be greater than 1. So now let's talk about the question which this gate people love the most, जो इनको बहुत पसंद है. Specifically if I talk about aptitude, so aptitude के अंदर उनको ऐसे questions बहुत पसंद आते हैं that we used to study in our schools. Yes, tell me what will be the answer. Point four. Yes, what is the answer? So point four. 1 by 12. Let's see what is the correct answer. Okay. So a bag contains of 4 red balls and 3 black balls, and man draws 2 balls at random. What is the probability that both the balls are being red? Okay. Simple सा question है. The thing is, पहली चीज समझते हैं. See, the total number of balls over here will be 7. Right. Total number of balls equal to 7. Okay. And 2 are drawn at random. So first of all, let's talk about drawing 2 balls out of 7. ठीक है. So what are the possibilities? What are the chances? अच्छा, मैं 2 बॉल उठा रहा हूँ. Is the order? Does the order matters? Order matter करता है कि पहले कौन सी बॉल है, बाद में कौन सी बॉल है? No, sir. No. Right. See, that is correct. Order is not important over here. Why? Because if I talk about red ball, तो चाहे पहले रेड आए चाहे बाद में रेड. If I'm getting 2 red, that is fine. 2 reds. ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा कि the first ball is black, the second ball is red. ऐसा नहीं. अगर मैं 2 बॉल उठा रहा हूँ, one is black, second is red, then also is fine. First is red and second is black, then also it is fine. So order is not important. और order जहाँ पर important नहीं होता है, order is not important, वहाँ पर हम use करते हैं combinations. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर परम्यूटेशंस आते हैं, और जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता वहाँ पर कॉम्बिनेशंस आते हैं. सो
Now let's talk about combinations आने वाले हैं. So total number of possible combinations. Total कितने combinations हो सकते हैं if we have this kind of thing. So I have 7 balls and I have to choose 2 at a time. So 7C2 the total number of possible combinations है. Now so and now what is the favorable outcome? The favorable outcome is both the balls are being red. So let's talk about total number of favorite outcomes. So, total number of favorable outcomes कितने हैं? अच्छा मेरे पास रेड बॉल कितनी है? So I have 4 red balls. So I have 4 red balls and I am choosing both of the red balls. That is your favorable outcomes. बस आपके पास possible outcomes आ गए और favorable आ गए. You can calculate the probability. The probability of event will be favorable outcome, that is 4C2 divided by total number of outcomes 7C2. 7C2 को if you want to define, it will be 7 factorial upon 2 factorial multiplied by 7 minus 2 यानी कि 5 factorial. वहीं पे अगर 4C2 को आप डिफाइन करो तो 4 factorial upon 2 factorial multiplied by 4 minus 2 यानी कि 2 factorial. So let's substitute the values. You will get 4 factorial, 2 factorial into 2 factorial multiplied by 2 factorial into 5 factorial upon 7. ठीक है. So ये उल्टा हो जाएगा because ये डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. Solve this and tell me the answer. I already got one answer in the chat box and that is correct. Just solve it and let me know what is the answer you're getting. Yes, the answer that you'll be getting over here is 2 by 7. If you solve this, you're going to get 2 by 7 and this becomes your final answer. Let's move on to the next one. Okay, try to solve this one. Two by 9. Let's see what is the answer over here. So a fair dice is rolled twice. What is the probability that the sum of result is at least 9? So those dice को roll कर रहे हैं आप. So first of all, let's find out what will be the total number of outcomes. Let's say पहले dice में 1 आया, दूसरे में भी 1 आया. पहले में 1 आया, दूसरे में 2 आया. Similarly, I'll go from 1 to 6. जैसे दूसरे में suppose पहले में 2 आया, दूसरे में 1 आया. 2 2 and then 2 2 6. ऐसे मैं जाऊंगा 6 तक. Right? 6 1 6 2 और up to 6 6 ऐसे मेरे पास टोटल आएंगे. So 6 rows, 6 columns, a total of 36. So total number of outcomes will be 36. इसको निकालने का दूसरा सिंपल तरीका क्या है? On one dice, your outcome will be 6. Since 2 dice are thrown, so the total number of outcomes will be 36. So total number of outcomes becomes 36. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया पहली चीज. Secondly, favorable outcomes की बात करते हैं.
सो फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे यहाँ पे? ऐसा बोला हुआ है दी सम शुड बी एट लीस्ट 9, ठीक है, या तो 9 होगा या 9 से ऊपर होगा। क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 11, इट कैन आल्सो बी 12। अच्छा 12 से ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज दोनों डाइस में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो जाके 12 आएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन वी हैव 6 एंड 6, तब हमारे पास 12 पॉसिबल होगा। 11 कब होगा? जब मेरे पास एक में 5 आ रहा है और दूसरे में 6 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पहले में 6 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, ये मेरे पास 11 पॉसिबल है। 10 कब आ रहा है मेरे पास? तो 10 कब आएगा? जब मेरे पास एक में 4 आएगा, दूसरे में 6 आएगा, या एक में 6 आएगा, दूसरे में 4 आएगा, दोनों में 5 आएगा। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। 9 की बात करते हैं, 9 कब कब आएगा? सो 9 आएगा जब 3 6 होता है, या 6 3 हो रहा है, जब 4 5 हो रहा है, या 5 4 हो रहा है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये जितने होंगे मेरे पास, दीज आर मेरे फेवरेबल आउटकम्स, ठीक। तो टोटल नंबर अगर मैं निकालने जाता हूँ यहाँ पर, सो इट विल बी 4, ये पहले 4, प्लस 3, ये सेकंड वाले के 3, प्लस 2, 10. प्लस 1, this will become 10. So I have total number of outcomes, I have favorable outcomes, I can calculate the probability. Required probability of the event, that is PE, will be favorable outcome 10 divided by total number of outcomes, or 5 by ET. This will be your answer. ठीक है, सिंपल तरीका है निकालने का। दिस इज लाइक सिंपलेस्ट वे यू कैन डू इट। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वन, next question. From a well shuffled deck of 52 cards, 3 cards are drawn at random without replacing them. What is the probability that the first card is of hearts, the second is of spades, and third is of clubs? Try to find it out. Excuse me, sir. Previous slide. It's just one. Okay. Completed, sir. Okay. Okay. Let's see. What's the answer. Right. Okay, I'll be telling you two methods to solve this question. It's on you which one you like, which one you want. From a well shuffled card, well shuffled deck of 52 cards, 3 cards are drawn at random without replacing. अच्छा ये दो कंडीशन बनती है that you need to remember जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, and you need to search for them. ठीक है, कि with replacement है या without replacement है। with replacement without replacement कंडीशंस जो हो जाती है वो बदल जाती है, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक, सो अब मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकाल रहा हूँ आउट ऑफ इस वेल शफल्ड डेक। ठीक है, so this is first thing. And what is the probability that the first card is of hearts, second card is of spades, third card is of clubs? Right.
before we jump into the question or the solution of the question, just little bit of things that you guys already know, just to cover up the basics. A standard deck of card, अगर आप deck of card की बात करते हो, अगर उसमें कुछ भी moderate नहीं किया हुआ है या modify नहीं किया हुआ है, so it has hearts, it has clubs, it has spades, it has diamonds. कि ये जो चार कलर होते हैं, ठीक है, ये जो चार कलर होते हैं, और each of them there are 13 cards of each suit or each set. इसको suits बोलते हैं वैसे. So each suit has 13 cards. There are 52 cards in total. ठीक है, तो अगर आप ऐड करोगे you'll get 52 cards. Now out of these 13 cards, each of the suit will be having one ace. Right, ace जो इक्का होता है उसको बोलते हैं 2, 3, 4 up to 9, 10, sorry, up to 10. Then we have jack, J, queen, Q, and king. So all together अगर आप ace देखने जाओ, so how many ace do we have? We'll have 4 ace, each of one color. Similarly 4 jack, 4 queen, and 4 king. क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं, in which you have to find out different things. So ये चीज हो जाती है यहाँ तक समझ में आनी चाहिए आपके. So this is 50. Fine. So ये जो है ऐसे हम कार्ड्स को डिवाइड करते हैं. Now let's get back into the question. कि क्या है क्वेश्चन में पूछा हुआ है. Now क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है without replacement these cards are being drawn. So let's do it by combination first. Then we'll talk about कि इसको जनरल तरीके से कैसे कर सकते हैं. So the first card that I'm going to pick up. So what is the probability of total outcomes? So I have 52 cards, out of which I am going to pick one card. So, yes, I have 52 cards. I'm going to pick one card. That is the total number of outcomes. What is the favorable outcomes? The first card ऐसा पूछा गया, it is of hearts. Now how many hearts do I have? I have 13 hearts. So out of 13, I am choosing one. That is a favorable outcome. ये पहले कार्ड के लिए हुआ है. Now इसके साथ साथ दूसरा कार्ड भी एक पूछा हुआ है कि दूसरे कार्ड का भी एक सीन दिया हुआ है, वो भी हमें कंडीशन दी हुई है. सेकंड कार्ड इज ऑफ स्पेड्स. सेम चीज. अब मेरे पास कितने कार्ड्स बचे टोटल? सो अगर 52 में से मैंने एक तो निकाल लिया, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड कार्ड, और रिप्लेसमेंट हमने किया नहीं, सो एक कार्ड कम हो जाएगा, यानी कि आई हैव 51 कार्ड्स and to choose them I have 15 C1 combinations. What is the favorable combination? The favorable combination ऐसा रहेगा कि भाई मेरे पास कितने spades हैं. So देखो heart में से एक निकला है, spade में से एक नहीं निकला है, so I have 13 spades and I am choosing one out of them. Right? ये दूसरा है. तो सेकंड केस हो जाएगा. थर्ड केस की बात करते हैं. अभी तक मेरे पास दो कार्ड निकल चुके हैं, so out of 52 2 cards have been taken out, यानी कि बचे कितने? 50. And we'll take the third one. Right? So 50 C1 मेरी तीसरी कंडीशन हो जाएगी. थर्ड is of clubs. So एक हार्ट से निकल गया, एक स्पेड से निकल गया. The clubs still have 13 cards, so I have 13 C. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे you'll get the answer. Simple तरीका है. This is how you can do it. This is the first approach. The second approach that I'll be telling you is like this. Now think of it. The favorable outcomes की बात करते हैं. So total कितने कार्ड्स हैं मेरे पास? 52 तरीके हैं कार्ड्स चूज करने के लिए. 52 कार्ड्स हैं. हार्ट्स कितने हैं? So I have 13 hearts. That is done. Second, multiplied by. अब मेरे पास स्पेड्स कितने बचे? तो स्पेड्स तो मेरे पास 13 है, लेकिन कार्ड कितने बचे हैं? कार्ड से 51. 13 by 51 सेकंड तरीका है, एंड 13 by 50 थर्ड possibility. So in this way you can obtain the answer. Can you tell me what is the answer you are getting? Zero point zero one six five. That is correct. If you find it in decimal, it is somewhere nearby 0.01657. And to find it in fraction, this 13 will get cancelled over here by 4. 51 into 5, 255, 255 into 4, 1020. 1020, इस 50 का एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा. And in the numerator we'll have 13 square, यानी कि 169. This is the answer you are going to get. You can solve the other one also, you'll get the same answer. Second वाला easy है, इसलिए मैंने उस तरीके से किया.
ये कार्ड की क्वेश्चन है, these are also favorite questions in terms of probability. तो अगर probability cover करने के लिए बोला हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. Let's see the next one. Try to solve this one. Four by 7. Let's see what is the correct answer. Let us solve this one. So a letter of word message are placed in a row at random. What is the probability that two s come together? अच्छा यहाँ पर जो बात हो रही है taking all at a time. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं बोला हुआ कि दो ही लेटर लिए हुए, two out of these words या four लिए हुए. So we have to take all at a time. और जब भी हम all की बात करते हैं, so 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 alphabets. There are 7 alphabets. So the possible ways of arranging. Seven letters of this word. कितना हो जाएगा? Simple है, 7 factorial. ठीक है, 7 factorial हो जाएगा. This is the possible ways. लेकिन यहाँ पर क्या important है? देखो s दो बार repeat हो रहा है and this e is also getting repeated twice. तो दो letters है जो दो बार repeat हो रहा है, तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा. So we have to divide it by 2 factorials, that to 2 times. एक बार s के लिए, it's because s is being repeated twice. It's because e is repeated twice. एक बार s रिपीट हो रहा है, एक बार e रिपीट हो रहा है. These are possible ways of arranging letters e. ठीक है, अब total possible ways, total possible, simply total possible outcomes. Now favorable outcomes की बात करते हैं. Now what is the probability that the two s come together? So इन दोनों को हमें एक यूनिट मान के चलना है. So इन दोनों को अगर मैं 8 यूनिट मान के चलता हूँ तो बाकी मेरे पास बचेंगे 5. So 5 plus 1 6. So I have to find out the favorable outcomes. Favorable outcomes हो जाएंगे मेरे पास 6 फैक्टोरियल 6. ठीक है, अब जो बचे हुए नंबर है उसमें भी e तो है, वो तो दो बार रिपीट हो ही रहा है, तो दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसका 2 फैक्टोरियल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. That is the answer. So now you can calculate the probability. Probability of the event will be favorable outcome, that is 6 factorial by 2 factorial upon total number of outcomes, 7 factorial upon 2 factorial. Can you solve this and tell me the answer? Excuse me, sir. Yes. सर ये फेवरेबल आउटकम्स में 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा? 6 factorial into 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नहीं. into 2. क्यों ऐसा? यस सर. किसी 6 टोटल 6 प्लेसेस है और जो एक हमने दो एस को हम सेम रखा था वो
मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं ना 2 फैक्टोरियल की तरफ। सर 2 फैक्टोरियल मतलब ये 2 फैक्टोरियल तो चला जाएगा ना, वो 1 हो जाएगा, डिवाइड में है ना। वही समझा, 2 फैक्टोरियल, हाँ एक तो चला जाएगा, वो हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या आंसर हो इज रहा 2/7। है, आंसर विल बी 2/7। देखो क्या होगा, I'll tell you कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक चीज तो जो दो एस है वो दोनों तो एक ही यूनिट बन गए, ठीक है, और दोनों में कोई कौन आगे आ रहा है कौन पीछे आ रहा है, दैट डजंट मैटर, बिकॉज़ दोनों सेम ही वर्ड, ठीक है। सो अब इन दोनों को तो मैं एक यूनिट मान के चलूंगा, अब इसमें से आगे पीछे भी होते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे आर सेम लेटर्स। हमने ये डिवाइड किया था, कब किया था, जब दोनों अलग अलग लेटर होते थे तब हम इसको डिवाइड करते थे, ठीक है। और यहाँ पर तो सेम लेटर है, तो यहाँ पर तो जब हम ऐसे करते थे कि वॉवल्स को साथ में लेना, सो वॉवल्स में हमारे पास ए ई आई ओ यू सब आते थे, तो उसमें हम उसको डिवाइड करते थे, बिकॉज 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल वो आगे पीछे होते थे, तो हम पॉसिबिलिटी निकालते थे। अब इस केस में ऐसा नहीं है, दोनों सेम लेटर है तो वी डोंट नीड टू डिवाइड। अब मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, एम ई एस, एस तो एक ही साथ है, ए जी ई, ठीक है। इन सबको मुझे अरेंज करना है, तो मेरे पास टोटल कितने यूनिट हो गए, 6, 6 फैक्टोरियल्स मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल मेरे पास प्लेस है, अब इसको समझना ध्यान से, ठीक है। 6 फैक्टोरियल मेरे पास प्लेस है, तो यहाँ पर मेरे पास 6 चॉइस है, यहाँ पर मेरे पास 5 चॉइस है, यहाँ पर मेरे पास 4 चॉइस है, 3 2 1, ठीक है। मेरे पास ऐसे 6 6 इंटू 5 इंटू 4 ऐसी चॉइसेस मेरे पास बचती है, 6 फैक्टोरियल बच गए। अब यहाँ पर ई जो है वो 2 बार आ रहा है, सपोज मैं ई यहाँ पर चूज करूँ या ई मैं यहाँ पर चूज करूँ, ठीक है, इट डजंट मैटर, तो मेरा यस क्या सर, हो गॉट जाएगा, इट। दोनों में ऑर्डर सर इंपॉर्टेंट होता ई कंसीडर नहीं किया था, 2 बार आ रहा है ना इसलिए। है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। यस सर। ट्राई टू सॉल्व दिस। 4/7। Okay. So a ball contains of 6 black balls and 8 white balls. One ball is round at random. What is the probability the ball is white? Yes, it's quite simple. ठीक है, total number of balls हमारे पास आ जाएंगी 14. 8 plus 6 is 14. So total outcomes will be 14. And favorable outcomes कितनी white balls हैं हमारे पास? We have 8 white balls. So probability हो जाएगी 8/4/7. It's simple. कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर. Let's move on to the next one. Let's try to solve this one. So maybe easy, but try to solve this. 3/13। Well, try to check your answer once again. 4/13। Let's see. So, one card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card or an ace? ठीक है, फेस कार्ड क्या होता है जिसमें एक्चुअली वी डोंट हैव नंबर्स rather than फेस। हाउ मेनी जैक्स वी हैव? वी हैव 4 जैक्स, 4 हमारे पास होते हैं जो हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब, राइट, हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब, इन चारों के 4 जैक्स होते हैं हमारे पास। सिमिलरली 4 क्वींस, 4 kings of 4 different colors, suits and 4 aces. So total number of favorable outcomes हमारे पास हो जाएंगे 16. That favorable outcome will become 16 and total number of outcome हमारे पास total 52 cards. ठीक है, so हमारी probability हो जाएगी 16/52.
that is 4 by 30. This will be a final answer. Okay. So in this question, just you need to identify कि jack queen king होते कितने. That is a yes. This one. Try to solve this one. I'll give you a hint over here. From a pack of 52 cards, 2 cards are drawn at random. ठीक है, तो हम सिर्फ 2 कार्ड की बात कर रहे हैं out of 52. Order again is not important. Order important नहीं है, मतलब हम क्या यूज करेंगे? We'll be using combinations. Combinations as order is not important. 3 by 13 into 51. Okay, let's see what is the answer. So क्या होगा? First of all, total number of outcomes हम निकालते हैं. Total number of outcomes कि क्या है? I have to choose 2 cards out of 52 cards. So total number of outcomes will be 52 and मुझे यहाँ से 2 कार्ड निकालने हैं. ठीक है, 52 C2 ये मेरे पास total number of outcomes. Now I need to find out what is the probability of having both the cards being kings. So how many kings do we have? Oh. So I have 4 kings. Out of 4 kings, I am choosing 2 kings. So that is a favorable outcome. So 4C2 it becomes a favorable outcome. यहाँ से आप probability निकाल सकते हो. Probability will be 4C2 divided by 52C2. You can solve this one. 4 factorial upon 2 factorial or 4 minus 2 again 2 factorial divided by 52 factorial divided by 2 factorial or 52 minus 2 यानी कि 50 factorial. Okay, you can solve this one. It will be something like 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial multiplied by 2 factorial into 50 factorial upon 52 factorial. Yes, solve this and tell me the answer. What is the answer you're getting? Either in fraction or decimal, कुछ भी चलेगा. Tell me the answer. 1 divided by double to 1. Yes, that's correct. Very good. 1 divided by double to 1. That is the correct answer. Okay, you can try solving this one. अच्छा question है, simple है. Just the use of combination is important. इसलिए हमने combinations पहले खत्म किया हुआ है so that we can use that concept over here to find out all the possible number of outcomes. Okay, this is one more question and this is the last question for the day. आज के लिए last question है. So try to solve this one. Zero point 4565. That's the correct answer. Okay, let's see कैसे कर सकते हैं इसको solve.
in a class there are 15 boys and 10 girls, 3 students are selected at random. तो यहाँ पर ही क्वेश्चन का आधा चीज पता चल जाता है. 3 boys they are selected at random. So combinations तो use हो रहे हैं because order is not important, and out of these total 3 students are getting selected. So total number of possible outcomes. वो हो जाएंगे आपके पास. Out of this 15 plus 10, that is 25 students, 3 students are getting selected. This is total number of possible outcomes, irrespective of boy है, girl है, क्या है. Now we have to find out probability that one girl is there and 2 boys are there. So we need to find out total number of favorable outcomes. Favorable outcomes के लिए, out of 15 boys, 2 boys are selected. So 15 boys and 2 boys are selected, multiplied by the 10 girls and 1 girl is selected. So 10 girls are there and 1 girl is selected. This becomes a favorable outcome. Now it is quite easy for you to solve the probability. So probability of event becomes 15C2 multiplied by 10C1 over 25C3. You can solve this one. You will get 15 factorial upon 2 factorial into 13 factorial multiplied by 10 factorial upon 10 factorial. Okay, 1 factorial up into 9 factorial divided by 25 factorial upon 3 factorial into 22. Yeah, आपके पास पूरा आंसर आएगा. And if you solve this one, you'll get the answer. I'll tell you the final answer क्या आ रहा है. That is 21 divided by 46. If you solve, it will be nearby 0.456. This is going to be a final answer. So we'll keep it up to here for today's session. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. Tomorrow we'll see some more questions related to this topic, and then we'll move on to the next one. That is हमारा Venn diagram, surds and indices. वो हम खत्म करेंगे. ये टॉपिक के अंदर मैं ज्यादा प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा. एट द एंड हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं. अभी आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. इसके रेगुलर जो प्रैक्टिस है दैट विल डू एट द एंड. So we'll keep it up to here. If you have any doubt, you can ask or you're free to. Thank you.